Good morning, all. So, welcome you for this next session on financial management, that is cost of capital. So, this is the most interesting topic which we are going to see today, that is cost of capital. You can see on the screen what is cost of capital basically. The cost which is paid for raising any type of capital. We all know that business require funds, maybe short-term funds, long-term funds for different kind of activities, because business cannot run without funds. And why business is started for making profit, but the risk capital must be invested by the owner. Two types of capitals are there which we have seen, and both are the capitals which are mentioned here. You can see students here, that is cost of debt and cost of owned capital. Debt is also called as loan capital, borrowed capital, and cost of owned capital is another one. So let's come on what is cost of capital. Cost of capital is nothing but the cutoff rate, minimum rate or hurdle rate, which you can see on the screen. So what is cutoff rate or hurdle rate there? Cutoff rate is nothing but the minimum rate of return which the company must earn, so that the shareholders should maintain their shareholding in the company. Otherwise, what will happen? For example, let me give a simple example to you. Say you have purchased shares of Infosys, and now you are expecting that Infosys must pay you 20% rate of return. And obviously, Infosys as a company should pay 20% cost of capital to you. Why? Because you are expecting that Infosys along with TCS, HCL Tech, the TCS and HCL Tech are the competitors, and they are paying 20% return. So you are expecting that Infosys should pay the same amount. So if Infosys is paying 20% or more than 20%, obviously you'll be happy with the company. Or else you would like to sell the shares of Infosys and would like to purchase for TCS and HCL Tech, because it is giving the expected rate of return. So do remember that the company has to pay the expected rate of return, minimum rate, cut off rate तो हम सबको पता था. एडमिशन अगर लेना है तो हमें एक पर्टिकुलर कट ऑफ मैच करना पड़ता है किसी भी एग्जाम का, वरना एडमिशन ही नहीं मिलता. सो दैट वे अराउंड दिस मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, कट ऑफ रेट और हर्डल रेट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. So every company must earn minimum rate, cut off rate or hurdle rate, otherwise the shareholders may not continue with the shareholding for that company. So cost of capital is also called as the cost paid for raising capital. This is in layman's language. Any cost which you are paying for raising different type of capital is called as cost of capital. There are two types of cost which you can see here. Number one is interest and another one is dividend. एक है interest और दूसरा dividend. These are the two costs given which you can see here. Now, interest you usually pay on cost of borrowed capital, which is also called as popularly cost of loan capital or cost of debt capital. सो याद रखिए, कॉस्ट ऑफ डेट को ही आप बोरोड बोलते हैं, उसी को आप बोलते हैं लोन कैपिटल, एंड दैट वे अराउंड इट इज देयर व्हिच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर. सो लेट्स सी, इट इज कॉस्ट ऑफ डेट, then cost of loan or borrowed capital. Now there are three sources as far as cost of debt or loan or capital is concerned. Number one is bonds and debenture. Indian context we call it as bonds, Western context it is called as debenture. It is a creditorship security which we have discussed. So this is nothing but common people can give loan to the company by investing in their bonds and debenture. Second is long-term loan which we can take from any bank or financial institution, say SBI, ICICI, HDFC, and public deposits for which there are so many procedures. You need to take the permission of RBI, even government of India. So usually companies don't go for raising public deposits as a source of financing that. At the same time, public deposits need to be issued for minimum period of 6 months, maximum period of 3 years. Means again, after 3 years, you need to pay it back. So usually people or companies don't go for public deposits. They rather go for bonds and debentures. They rather go for long-term loans. And this is the best source for raising capital as far as companies are concerned. Now, the another one is cost of owned capital, which is we are having, you can see here how many things we are having in cost of owned capital. Number one, the popular one, that is equity share capital. You can say that इश्क है तो risk है तो इश्क है, और इश्क है तो रिस्क है. Both the things are applicable as far as equity share capital is concerned, because this is the most riskiest source here. You need to take risk, and obviously that risk is going to be rewarded by equity share capital. The returns which are going to be produced in equity share capital we have seen already earlier. Number one, what we get in equity is dividend, for which these days people never purchase share, they purchase for कैपिटल गेन और कैपिटल अप्रिसिएशन. लोग आजकल शेयर्स क्यों खरीदते हैं बेटा? दैट इज फॉर कैपिटल गेन्स एंड कैपिटल अप्रिसिएशन. दे नेवर परचेज फॉर डिविडेंड, because the dividend is nominal and always it is paid on face value. And the last but not least, another return here as far as the cost of capital, cost of owned capital is concerned, and that is nothing but bonus shares. So that is the third return,
तो देखिए रिटर्न्स बहुत सारे यहाँ पे, क्यों? रिस्क है तो इश्क है, that way around you can see here. That is dividend is the first thing which you will be getting on cost of equity. Second, capital gains, that is आपने शेयर खरीदा 500 रुपए में, बेचा 1500 रुपए में, say for example it is IRCTC, that way around, very good company giving good dividend and good capital appreciation in the last 2 years after listing it on BSE and NSE. Third is issue of bonus shares is another thing. So equity देखिए इतने सारे रिटर्न देता है, तो इसका कॉस्ट हमें जानना है कि कैसे निकालते हैं. नेक्स्ट दैट वी नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी हमें कॉस्ट निकालना है. वी ऑल नो दैट ऑन प्रेफरेंस, देखिए ये सब डिविडेंड के नीचे दिया है स्टूडेंट्स. यू कैन सी दैट ऑल दीज आर गिवन अंडर डिविडेंड. मींस obviously the cost of owned capital is dividend, may it be equity share capital, may it be cost of preference share capital, or may it be reserve and surplus, or it is also called as retained earnings. So let's see the cost one by one. So one has to remember that the cost is either interest or dividend for any kind of cost there. So let's see the cost one by one now. So first one will go for cost of debt. सबसे पहले cost of debt हम देखते हैं. So cost of debt. Now there are two things. When you are going for cost of debt, it is going to be denoted as KD. देखिए KD, K is you can say capital and D is into the stomach of K there. Why so? Because it is a short form we are going to mention there. So how to calculate KD or how to calculate cost of debt capital? Now here again there are two types when we are calculating any cost of debt. Now one thing which is very interesting and easy to know here, that cost of debt is calculated on two bases. One is redeemable or irredeemable. लेकिन ऐसा तो नहीं होता. We all know that if you have taken a loan, you have to give it back to the bank or maybe to the financial institution from which you have taken. ऐसा होता है कि आपने लोन लिया और बोला कि अभी तो वापस नहीं आएगा. Obviously not. You need to pay it back. So usually practically वहाँ पे कौन सा डेट होता है? तो redeemable debt होता है. Now it may be in the form of bonds and debenture, it may be in the form of long term loan, or it may be in the form of public deposit. तो सबसे पहले देखते हैं cost of redeemable debenture और cost of redeemable debt. याद रखिए सबके लिए फॉर्मूला एक ही आएगा, बिकॉज वी आर नॉट सेग्रीगेटिंग हियर. सो लेट्स राइट डाउन कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट एंड लेट्स सी द फॉर्मूला फॉर द सेम. कि रिडीमेबल डेट का फॉर्मूला क्या आता है? रिडीमेबल डेट का सीधा साधा मतलब क्या है? दैट द डेट विच इज गोइंग टू बी रीपेड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, say a fixed period of time, say 5 years, 10 years, 20 years down the line, whatever may be there. So let's see the formula. Cost of redeemable debt, the formula is simply KD is equal to what is the usual cost there? Absolutely interest. आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. जब भी हम कॉस्ट की बात करते हैं, as far as debt capital is concerned, we need to pay interest as a cost on any kind of debt, and that is very much mandatory. We have seen as well कि कॉस्ट अगर हमें पे करनी है डेट के लिए, so that should be in the form of only interest there. So what is the formula? It is I, that is interest rate, I into bracket P minus NP whole divided by N, I into bracket P minus NP whole divided by N, or divided by P plus NP divided by 2. And obviously as it is interest is always going to offer you the tax shield there. So into bracket 1 minus T. So always this is the formula for cost of redeemable debt. Now let me explain what is this P, what is this NP, what is this N, and that way around we need to explain them, because otherwise the formula won't be clear for all of you. It is very easy. याद रखिए, आपने कोई भी लोन लिया है, कोई भी डेट लिया है, तो आपको पे करना पड़ेगा, और आपको उस पे क्या पे करना, what you will be paying on that as a return back to the lender or to the creditor. Obviously that is I. I is what? I क्या रहेगा स्टूडेंट्स बताइए? That is interest rate. It is also called as fixed rate of interest, because all we know that interest is always fixed. So I is interest, students. P is equal to, that is you can say the par value of debt, or you can say principal value of debt. मतलब जिसके लिए आपने बेसिकली इश्यू किया था, प्रिंसिपल का स्पेलिंग PAL रहेगा. as far as here par value of principal value of debt. Now that may be long-term loan, that may be public deposits, or that may be bonds and debenture. So P is par value or principal value of debentures or debt or long-term loan, whatever there. NP is what exactly? NP is, now at times you usually issue the bonds at discount. ऐसा कभी सुना है क्या कि लोन लिया आपने 15 लाख का और
बैंक ने आपको 10 लाख दिए, डिस्काउंट कर दिया लोन, ऐसा तो नहीं होता, लोन जितने का आता है उतने का ही आता है. सो इन केस ऑफ लोन this is not true, but in this is true when in case of debentures or bonds there. क्यों? क्योंकि bonds and debentures at time can be issued at discount or at premium. What does mean by discount at premium? Say the bond is of rupees 5,000, but the company is having tremendous reputation into the market. Say it is TCS bonds issue ला रहा है और TCS 5,000 का एक बॉन्ड बेच रहा है और उस पर उन्होंने 10% का प्रीमियम मांगा है. Whether investors will be ready to pay the premium? Yes, because they know that the company is damn good and they don't hesitate to pay 10% extra. So 5,500 के बजाय 5,000 के बजाय 5,500 पे करेंगे, एक्स्ट्रा 10% प्रीमियम पे करेंगे for the reputation of the company. Similarly, if the company is new and would be in desperate need of funds, it can issue it at discount. तो 5,000 का वो 10% डिस्काउंट पे दे रहे, मतलब आपको 4,500 पे देंगे. But while paying back in the future, they will pay back you 5,000. मतलब आपको 500 रुपए का फायदा हो रहा है as an investor, but कंपनी को लॉस हो रहा है. So net proceeds means actual amount received. So net proceeds can be calculated as you can see that into bracket it is आप प्रिंसिपल में क्या ऐड करेंगे, प्रिंसिपल प्लस प्रीमियम. अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा और अगर डिस्काउंट होगा तो प्रिंसिपल माइनस डिस्काउंट. और यू कैन सी दैट पार वैल्यू plus principal, or you can say that par value minus discount. As I've given you the example, 5,000 का बॉन्ड है, 5,000 का आप खरीद, लेकिन 10% प्रीमियम कंपनी मांग रहा है, तो आपको 5,000 प्लस 500 और देनी पड़ेंगे. मतलब नेट प्रोसीड्स कंपनी के लिए कितना हुआ, 5,500, जबकि एक्चुअल फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना है, सिर्फ 5,000 का. व्हाट इज द फेस वैल्यू? द वैल्यू विच इज प्रिंटेड ऑन द फेस ऑफ द बॉन्ड ऑब्वियसली. तो यहाँ पे एक्चुअल 5,000 का है लेकिन बेचा 5,500 में जा रहा है, तो कंपनी को 500 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा है यहाँ पे. And why company can do this? It is just because of reputation. TCS, Infosys, HUL, all these are tremendously reputed company. वही अगर डिस्काउंट पे किया तो माइनस करना पड़ेगा and that will be a loss for the company. So that is what NP. तो NP का भी max times it is different when it is issued at discount or premium. But आप जब पार वैल्यू पे इश्यू करते हैं, मतलब 5,000 का बॉन्ड अगर 5,000 भी बेचा कंपनी में, तो नेट प्रोसीड्स एंड पार वैल्यू विल बी वन एंड द सेम. सो दैट वे यू नीड टू रिमेंबर दैट. एंड व्हाट इज N? N is nothing but number of years to maturity. कितने साल के लिए आपने इश्यू किया, 5 साल, 10 साल, 15 साल. So number of years to maturity is nothing but N here. So that you can see here. And obviously T is the corporate tax rate. ये corporate tax rate है जिसपे कंपनी पे करेगा अपना टैक्स. So this is the formula, students. It is elaborated. You can see that the formula is I into bracket P minus NP upon N, whole divided by P plus NP upon 2 and whole multiplied by 1 minus T, because interest is going to offer the tax shield. What does it mean? Interest tax shield offer करता है, मतलब क्या है? इंटरेस्ट आपका टैक्स बचाता है. आपको याद होगा EBIT से पहले इंटरेस्ट माइनस होता है तो EBT आता है, EBIT से टैक्स, EBT से टैक्स माइनस होता है तो फिर पैट आता है. So as interest is going to deducted first before the taxes, it is obviously going to save your taxes. More is the interest, less will be the taxes, and vice versa. That is what the equation. So this is the full formula here. You can see KD is equal to I into bracket P minus NP whole divided by N divided by P plus NP divided by 2 and into bracket 1 minus T. So this is the formula, students, as far as cost of redeemable debt is concerned. ये redeemable debt का formula है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे. Next we are going to see irredeemable debt. Now you may be saying that whether this is the formula for all kind of debt. Then answer is yes. Any kind of debt, it may be long-term loan, it may be public deposits, or it may be bonds or debenture. The formula will be one and the same as long as it is redeemable. Practical context में तो redeemable ही होना चाहिए. Irredeemable तो बस theoretical बात है. ऐसा है क्या कि आपने लोन लिया और आप वापस नहीं लेंगे? So obviously that is not possible. So cost of redeemable debt is the most practical option which we have seen here. I hope you have got the formula along with all, whereas I is interest, P is par value or principal value of the debt, may it be bonds, may it be debentures, long-term loan or public deposits, and NP is net proceeds, and net proceeds is calculated as par value or face value plus premium minus discount there, and N is equal to number of years to maturity, and T is equal to corporate tax rate. So that is the whole formula. Let's go for another one. So we are done with redeemable debt. Now we are going for irredeemable debt. अभी irredeemable debt पे जाते हैं. So what is the formula for irredeemable debt? That is very easy. वैसे तो प्रैक्टिकली इरिडीमेबल डेट होती नहीं है, लेकिन यस हमें देखना पड़ेगा. कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट फॉर्मूला बनेगा. कॉस्ट तो हमें पे करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, एंड दैट इज ऑलवेज गोइंग टू डिनोटेड एज केडी.
ये KD से ही डिनोट हो जाएगी always. So let's see what is the formula for cost of irredeemable debt, and the formula is, क्या formula है cost of irredeemable debt का? It is KD is equal to, the formula is I into bracket simply 1 minus T. So very easy formula. प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं कि आपने डेट लिया और पे नहीं किया. KD is cost of debt as usual. I is equal to rate of interest और कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट. आप सोच रहे होंगे सर ये कूपन क्या होता है? कूपन इज नथिंग बट अर्लियर जब ये बॉन्ड्स इश्यू करते थे उसके साथ 5 साल के कूपन आते थे, 10 साल के कूपन आते थे, मतलब हर साल एक कूपन देना और अपना इंटरेस्ट लेना. बट अर्लियर इट यूज्ड टू हैपन. आजकल तो सारी चीजें आपके अकाउंट से रिलेटेड होती है, अकाउंट से लिंक्ड होती है. आपका डीमैट अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट, ऑल आर लिंक्ड. इवन योर पैन, आधार, इज एवरीथिंग इज लिंक्ड. So these days, I is interest which is directly credited to your bank account. T is your tax rate, that is corporate tax rate, and obviously I is going to offer you the tax shield. That is how it is into bracket 1 minus T. So that is the simple formula here. Say for example, you have taken a loan of 14% from HDFC Bank and you are paying, your company is in a tax bracket of 30% absolutely. आपने HDFC बैंक से लोन लिया 14% का, जहाँ पे आप टैक्स भरते हैं 30% से. अब लोन तो आप रिडीमेबल है वापस ही देंगे, लेकिन इरिडीमेबल अगर इसका कॉस्ट अगर निकालना है, जस्ट टू सी हाउ द टैक्स इज सेव्ड. सो आई टोल्ड यू दैट 14% इज योर कॉस्ट. सो इट इज 14 by 100. यू कैन सी into bracket 1 minus the tax rate I just told is 30. That is 30%, 30 by 100. So अभी देखिए मैं कॉस्ट निकालता हूँ. It is 0.14 into bracket 1 minus 0.30 because 30 by 100 is 0.30. अब इसको आगे लेके जाता हूं मैं कैलकुलेशन के लिए. 0.14 into bracket 1 minus 0.30 is 0.70 and 0.14 into 0.70 is, I think it will come 0.98, right? Because it is going to save your taxes. ये आपका टैक्स बचाएगा और इस तरह से टैक्स बचाएगा कि आपका 30% and now your cost is 0.98 which is 14 sevens are, it is 0.98 into 100 करेंगे तो this will come 9.8% only. ये सिर्फ आपका 9.8% आएगा. So what is this? Is nothing but your cost of capital. Effectively cost of capital आपका ये कितना आ रहा है? This is only coming 9.8%. So let's see how the calculation goes on. As far as the calculations are concerned, we just need to write it down. It is 0.14 multiplied by 0.70. Just I'm confirming once. Is equal to, is 0.098. Sorry, I was just thinking कि कुछ गड़बड़ हो रहा है. 0.098 और अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये परसेंटेज में होता है. सो दिस विल कम, डेसिमल आगे 2 प्लेस खिसक जाएगा. याद रखिए अगर आपको इनटू करना है तो डेसिमल आगे 2 प्लेस चला जाता है, डिवीजन करना है तो डेसिमल पीछे 2 प्लेस चला आता है. दैट इज व्हाट द कॉमन लॉजिक. सो 9.8 इज योर कॉस्ट एज फार एज दिस लोन इज कंसर्न, जो एक्चुअली था 14%, लेकिन टैक्स रेट की वजह से जितना टैक्स आप भरेंगे उतना आपका इंटरेस्ट बच जाएगा. सो दैट इज हाउ कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट इज कंसर्न एंड इट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड. सो यू कैन सी कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, यू कैन सी कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, बोथ वी हैव सीन. आप देख सकते हैं ऊपर हमने कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट देखा, उसका फॉर्मूला देखा, नीचे हमने कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट देखा और हमने ये भी देखा कि ये किस तरह से आपका टैक्स सेव करेगा. बिकॉज इंटरेस्ट इज अ टैक्स सेविंग एक्सपेंडिचर, इट इज अ टैक्स benefiting expenditure. That is how you can write down interest offers tax shield. ये बस आपके नॉलेज के लिए है, याद रखिए interest offers tax shield. आप बोलेंगे फिर तो अच्छा है सर कि बार बार तो आप लोन कैपिटल ही लीजिए. Then answer is no. Why? Because it is very risky. Because non-payment of interest can liquidate the assets of the company and can enforce the company into liquidation. तो ये अच्छा सोर्स नहीं है. जितना हो सकता है उतना बचा जाए. इसका रीजन ये है, आपने रिसेंटली देखा होगा RIL, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ डेट फ्री कंपनी. उन्होंने 2020-21 में कहीं पे मेंशन किया था कि 2023 तक हम डेट फ्री हो जाएंगे, बट कुछ अच्छी डील उनको मिली और उन्होंने सारा डेट पे कर दिया. तो डेट फ्री कंपनी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज गुड. रीजन, यू नीड नॉट हैव एनी टेंशन, एनी प्रेशर. पैंडेमिक हुआ, कोरोना आया या और कोई अनसर्टेनिटी बिजनेस में आई, लॉस हुआ, तो सारा पैसा आपका लगा है, आपको बैंक को कुछ देना नहीं है, EMI का टेंशन नहीं है. सो लेस इज द लोन, ऑब्वियसली यू डोंट हैव एनी बर्डन देयर. सो दिस इज हाउ it is very good for you, and you can see here that is cost of redeemable debt, how it is calculated, and then cost of irredeemable debt. हमने देखा कि cost of redeemable और irredeemable debt किस तरह से निकलती है, and both these formulas are, do remember, applicable for all types of debt. So bonds and debenture आएंगे तो भी यही formula आएगा.
लॉन्ग टर्म लोन्स आएंगे तो भी यही फॉर्मूला आएगा, एंड इवन इफ इट इज पब्लिक डिपॉजिट द फॉर्मूला इज वन एंड द सेम. नेक्स्ट लेट्स सी द अनदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉस्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल. नाउ अभी हमें कौन सी कॉस्ट देखनी है, so that is cost of owned capital. अब owned capital में कौन सी कॉस्ट हम सबसे शुरुआत में देखेंगे, तो उसमें हम सबसे शुरुआत में देखेंगे the number one which you have just seen, that let's see cost of preference shares. हम preference shares सबसे पहले देखते हैं. preference shares इसलिए क्योंकि ये somehow similar जाता है आपके डेट के साथ. it is a hybrid mode of option for raising capital, so it is cost of PSC. PSC is for preference share capital and it is going to denoted as KP. KP क्यों, cost of preference है इसलिए KP. अब इसमें भी वही दो ऑप्शन आते हैं, प्रेफरेंस शेयर आप कैसे इश्यू करेंगे, इरिडीमेबल या फिर रिडीमेबल. आंसर इज बोथ. obviously irredeemable. These are, what is the preference shares? Preference shares are nothing but the shares which are issued by the company or promoters to its family members, to its colleagues, to friends. Why? Because these are the people who can trust you in the initial years of the business. जहाँ पे आपको कोई भरोसा करने को रखने को तैयार नहीं है, नया है आपका सारा सेटअप, तो obviously these people are going to trust you. So let's see the cost here. So cost of redeemable debt, number one, cost of redeemable preference share. So it is RPSC, I'll write it down. And second is cost of irredeemable preference share capital. तो ये दो चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं. फॉर्मूला वही रिपीट होगा ऊपर का, ऊपर आया था, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड. सो इट इज DP into bracket P minus NP whole divided by N divided by P plus NP divided by 2 into की जरूरत नहीं है because dividend is not going to save the taxes there. डिविडेंड टैक्स नहीं बचाता, इंटरेस्ट टैक्स बचाता है, तो यहाँ पे इंटू की कोई जरूरत नहीं है. डू रिमेंबर दिस. Whereas cost of irredeemable preference share capital is, it is simply preference dividend divided by net proceeds. मतलब आप कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं और आपको पैसा कितना मिल रहा है. बिकॉज अगेन प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम. एट पार इशू करेंगे तो 1000 का 1000 में ही बेचेंगे, मतलब आपको ना कुछ एक्स्ट्रा मिला ना आपने कुछ लॉस किया एज फार एज कंपनी इज कंसर्न. डू रिमेंबर ऑल दीज थ्री ऑप्शंस, ये तीनों एप्लीकेबल होते हैं. दैट इज इशूड एट पार, बस आपके नॉलेज के लिए यहाँ फटाफट मैं बता देता हूँ. इशूड एट पार, इसी को फेस वैल्यू बोलते हैं, इसी को नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं. इशूड एट पार वैल्यू, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू. इसका सीधा साधा मतलब है कि कोई एक चीज है जो 1000 की है और आपने इश्यू भी किया 1000 में ही, मतलब कंपनी हैजंट रिड्यूस्ड एनी अमाउंट और हैजंट चार्जेस एक्सेस अमाउंट. एक्सेस चार्ज करेंगे तो उसको प्रीमियम बोलते हैं, रिड्यूस किया तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं. वो अभी हमने देखा. और ये कब किया जाता है, ऑब्वियसली व्हेन कंपनी इज हैविंग say premium and it is having tremendous reputation into the market, तो ऐसा किया जाता है. So issued at par is first. second जाते हैं issued at premium. प्रीमियम का मतलब है, आपको पता है कि बल्ले बल्ले आपकी बड़ी रेपुटेशन है मार्केट में, you are enjoying that, so you are issuing one thing of rupees 1000, you said that you will be charging it 20% premium on the same चीज. तो 1000 की है लेकिन आपने बोला कि 20% प्रीमियम पे इश्यू करेंगे, तो 20% 1000 पे 200 रुपए आएगा, तो इट इज 1000 प्लस 200, इसका इश्यू प्राइस बन जाएगा 1200. दिस इज कॉल्ड एज इश्यूड एट प्रीमियम. तो देखिए एक चीज है 1000 की, एक्चुअली द फेस वैल्यू इज 1000, नॉमिनल वैल्यू इज 1000, पार वैल्यू इज 1000, but you are charging 1200 because of your reputation, so this is issued at premium. Number 3, that is issued at discount, the last one. डिस्काउंट पे इश्यू करना, इसका सीधा साधा मतलब होता है कि यू आर इन डेस्परेट नीड ऑफ फंड्स एंड यू आर ऑफरिंग सम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट सो दैट पीपल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर कंपनी. सो इट इज से 10% डिस्काउंट. 10% 1000 पे कितना आता है डिस्काउंट. प्रीमियम का निकालना बड़ा आसान है. 1 0 हटा दीजिए तो 10% बचेगा, 2 0 हटा दीजिए तो 1% बचेगा किसी भी फिगर का. तो फिगर 1000 है हमारे पास, 1 0 हटाया तो 100 रुपए बचा, मतलब दिस इज योर 10%. तो 1000 माइनस 100, दैट इज योर इश्यू प्राइस, इन दिस केस इज रुपीज 900. तो यहाँ पे कंपनी को लॉस हो रहा है बिकॉज कंपनी इज इश्यूइंग एट डिस्काउंट. ऊपर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है बिकॉज कंपनी इज इश्यूइंग एट प्रीमियम एज इट इज इनकैशिंग इट्स रेपुटेशन एंड इश्यूइंग द थिंग्स एट 20% प्रीमियम. तो यहाँ पे irredeemable preference share का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है. इट इज डिविडेंड व्हिच इज गिवन बाय द कंपनी टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर व्हिच इज ऑलवेज फिक्स्ड.
ऑब्वियसली इट इज नॉट मैंडेटरी बाय लॉ बट इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। एंड इसके लिए जो भी नेट प्रोसीड्स आता है, नेट प्रोसीड्स का सीधा साधा मतलब है कि कितना आपको मिल रहा है। आर यू इशूइंग एट पार वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, यू आर इशूइंग एट प्रीमियम और यू आर इशूइंग एट discount. So that is what given. Whereas cost of redeemable preference share capital, you can see the formula. It is dp into bracket p minus np whole divided by n and whole divided by p plus np upon 2. So that is the formula. Into 1 minus t नहीं आएगा। So ये cost of redeemable preference share का formula है, देख लीजिए आप। और इसके p np is same which we have seen in the earlier thing as well. Just for your reference, I'll show you कि p np क्या होगा। अब dp is preference dividend, P is equal to par value of principal value of the preference share here. Earlier it was debt, जिसमें या तो लॉन्ग टर्म लोन आएगा या तो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर आएगा या तो पब्लिक डिपॉजिट। एनपी इज नेट प्रोसीड्स, जिसको हम निकालेंगे कि फेस वैल्यू प्लस या तो प्रीमियम या तो माइनस डिस्काउंट। दैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द नेट प्रोसीड्स। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी। नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी आप क्वेश्चन में दिया रहेगा तो बस वो अप्लाई करना है। एंड टी इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो दिस इज द सेम देयर, बट यहाँ पे 1 माइनस टी सिर्फ नहीं है। एज फार एज irredeemable preference shares are concerned, redeemable preference shares are concerned, irredeemable का तो फॉर्मूला dp upon np है। और याद रखिए that if debt is issued at face value or par value, if debt is issued at premium or debt is issued at discount, same way preference shares can be issued at face value, they can be issued at premium or at discount, then this is the methodology adopted here। यहाँ पे principal value, face value और नॉमिनल वैल्यू और इसका एक्चुअल नेट प्रोसीड्स अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1000 का शेयर है, आपने 1200 में बेचा, प्रीमियम पे 20% प्रीमियम लिया। 1000 का शेयर है और आपने बेचा 10% डिस्काउंट में, मतलब 900 में बेचा तो आपको लॉस हुआ 100 का। सो दैट वे अराउंड इट इज इशूड एट फेस वैल्यू, पार वैल्यू, और इट इज इशूड एट प्रीमियम और डिस्काउंट। दीज आर द टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर फॉर यू। सो दीज आर द फॉर्मूलाज। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हियर, एंड दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। These days everybody is interested in making money right from the inception. So we are supposed to see cost of common shares or ordinary shares, which is called as cost of owned capital. Owned capital की हमें cost देखनी है। जो इक्विटी शेयर हम मार्केट में खरीदते हैं, जिससे हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। We expect capital appreciation, the number one, और capital gain. We expect dividend on the same, and at the same time we expect bonus issue, जिससे बोनस की भी हम उम्मीद रखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल देखना है। अभी ओन्ड कैपिटल पे ये तीन चीजें मिलती है एक्चुअली एज अ रिटर्न। जैसे मैंने आपको बोला, कॉस्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल पे आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज आप एक्सपेक्ट करते हैं डिविडेंड, दूसरा आप एक्सपेक्ट करते हैं कैपिटल गेन और कैपिटल एप्रिसिएशन, और तीसरा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इस पे बोनस भी मिले, बोनस शेयर्स भी मिले। 1:1, 2:1 ऐसा आपको मिले तो आपको बढ़िया ही लगेगा। तो ये तीन रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसकी कॉस्ट कैसे डिसाइड करेंगे, इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इट इज वेरी इजी एक्चुअली हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल। हमें ये तो सबको पता है दैट कॉस्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड व्हिच इज सपोज्ड टू बी declared and which is supposed to be paid each and every year. So इसमें approaches है, there are 3 to 4 approaches as far as cost of owned capital. So let's see the approaches. Number 1, सबसे पहला approach क्या है, that is dividend price approach. Number 1 is dividend price approach. What are these approaches? Is nothing but the cost is going to be decided by the current dividend which is paid by the company, or the market price of the company is decided by the current dividend which is paid by the company under cost of owned capital. तो cost of owned capital के अंडर ये जो dividend price approach है, ये क्या बोलता है कि आप जो dividend देते हैं उसी के बेसिस पे आपकी डिसाइड होती है कि कॉस्ट आपकी कितनी है। So that is, you can say that dividend price approach number 1. Number 2, you are having obviously पहला डिविडेंड प्राइस अप्रोच है, दूसरा है डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। सो इट इज डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ। आप एक्सपेक्ट करेंगे क्या कि डिविडेंड सेम रहे हर साल, या आप एक्सपेक्ट करेंगे बढ़ता रहे। विच वन इज गुड लॉजिकली? एब्सोल्युटली यू वुड लाइक टू इंक्रीज द डिविडेंड ईच एंड एवरी ईयर। सो दैट वे अराउंड इट इज डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, द सेकेंड वन। तो ये देखिए डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच, दैट इज अर्निंग प्राइस अप्रोच। Now let me explain you all three approaches in detail, and then we are done with this cost as far as today's class is concerned. So it is earning price approach, ये तीसरा है, which is called as earnings price approach. अब ये किस तरह से निकालते हैं कॉस्ट यहाँ पे और क्या इसका बेसिस है, that is also we are going to see. Now the first approach says that the cost is going to be calculated on the basis of current year dividend only. So the formula is absolutely K is equal to
इट इज डी बाय एम पी। इसका फॉर्मूला क्या है? K is equal to D by MP. D is equity dividend and M is equal to market price per share. We all know that equity shares are traded on the stock exchange and their value is going to keep on fluctuating, either increasing or decreasing depending on their performance. लेकिन हम सबको ये भी पता है कि only dividend cannot decide that what should be the market price of equity share. So this is not the logical approach as far as dividend price approach is concerned. और हमने ऊपर ही देखा कि सिर्फ dividend decide नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं कैपिटल गेन है और बोनस शेयर्स है, ये सारी चीजें डिसाइड करती है कि कंपनी का मार्केट प्राइस क्या रहेगा। सो लेट्स सी फर्दर। सो डिविडेंड प्राइस अप्रोच इज K इज इक्वल टू डी बाय एमपी। डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको सिर्फ डिविडेंड ना मिले, उसमें ग्रोथ भी हो जाए। सो फॉर्मूला इज K इज इक्वल टू डी बाय एमपी प्लस जी। Obviously D is dividend, MP is market price and G is growth rate. I'm going to write down all of them for you. सो ये सिर्फ बोलता है कि करंट डिविडेंड ही नहीं, उसमें जो ग्रोथ होगा वो भी डिसाइड करेगा मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगी। तीनों अप्रोचेस क्या है, लेट मी टेल यू इन वेरी शॉर्ट एंड इन इंटरेस्टिंग मैनर। द फर्स्ट वन सेज दैट कि मार्केट प्राइस जो इक्विटी शेयर का डिसाइड होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड जो करंटली आप पे करते हो डिसाइड होता है, विच इज नॉट एट ऑल लॉजिकल, बिकॉज हम देख रहे हैं कि सिर्फ डिविडेंड ही नहीं है, डिविडेंड के साथ और दो चीजें हैं। दूसरा अप्रोच बोलता है कि द मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर इज गोइंग टू बी डिसाइडेड नीदर बाय डिविडेंड बट इवन ग्रोथ रेट इनटू डिविडेंड। सो दूसरा अप्रोच बोलता है कि डिविडेंड नहीं, कि सिर्फ उसमें ग्रोथ रेट भी है तो उसको ऐड करना पड़ेगा, देन ओनली मार्केट प्राइस कैन बी डिसाइडेड। अगेन नॉट लॉजिकल, बिकॉज ओनली डिविडेंड कैन नॉट बी द फैक्टर टू डिटरमाइन द मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर। तीसरा अप्रोच सबसे लॉजिकल है, क्यों? बिकॉज अर्निंग का मतलब क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या क्या बचता है, इक्विटी शेयर होल्डर को वापस देने के लिए आपके पास क्या क्या बचता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है के इज इक्वल टू ईपीएस अपॉन एमपीएस। मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी सिर्फ आपका डिविडेंड डिसाइड नहीं करेगा, आपका कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं डिसाइड करेगा, बोनस शेयर डिसाइड नहीं करेगा, रादर ये तीनों का कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा। क्योंकि ईपीएस का मतलब क्या है, ये फ्लो देखिए, मैं आपको ईपीएस यहाँ पे समझाता हूँ स्टूडेंट्स। आपको याद होगा मैंने बोला था इट इज ईबीआईटी द फर्स्ट थिंग। इसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आपका मिलेगा ईबीटी, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से आप टैक्स माइनस करेंगे तो आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स मिलेगा। एंड फर्दर गोइंग लेस टैक्स करता हूं यहाँ पे, तो ये आएगा आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स और पैट विच इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट एज वेल। अब इससे आप डिविडेंड देते हैं, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है आपका क्या है, इसी को बोलते हैं पैट एंड द सेम इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। सो इट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट। अब इससे आप डिविडेंड देते हैं, लेकिन सबसे पहले डिविडेंड आप किसको देते हैं, यू फर्स्ट पे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। नाउ दिस इज द अमाउंट एप्लीकेबल फॉर ईपीएस, या इसी को आप ईपीएस बोल सकते हैं, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ईपीएस का मतलब ये है कि आप कितना पे कर सकते हैं। ऑब्वियसली ईपीएस, ये पूरा का पूरा पैसा जो ईपीएस बचा है, दिस इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। एंड ये ईपीएस देखिए यहाँ पे केई के सामने ईपीएस आएगा डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। फिर से अर्निंग प्राइस अप्रोच एक्सप्लेन करता हूँ, याद रखिए कि मार्केट प्राइस जो है इक्विटी शेयर का, वो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड नहीं डिसाइड कर सकता, दैट इज बाय डिविडेंड प्राइस अप्रोच। इट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। ये डिविडेंड प्राइस और ग्रोथ सिर्फ डिसाइड नहीं कर सकता, rather it should be decided by what, it should be decided by its earning price। or what is earning constitutes or earning includes dividend as well as capital appreciation। so ये बहुत चीजें उसमें include होती है, तो याद रखिए this is the most logical formula। let me write down where for all of you। so where here, यहाँ पे अगर where देखें तो क्या है, कहाँ पे, ये हम देखें so better है, let's write down where the first one is KE is equal to cost of equity capital। KE का मतलब क्या है, cost of equity share capital और equity capital। उसके बाद D, सिर्फ D आया तो हमने उसको क्या माना, this is always believed as equity dividend which is a variable income security। equity पे dividend बेटा confirm होता है, पक्का होता है, या keep on changing? we all know that it is keep on changing। so that is equity dividend students। so D is equal to equity dividend MP। MP is what, market price per equity share। ये market price है equity share का। अब बचा क्या, जो बचा वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, what is pending there।
The pending is obviously G. G is what? Growth rate into dividend. Growth rate into dividend is what your G is. तो ये आपका growth rate है students. And last, EPS. How to calculate EPS and what is the full form of EPS? Just for your knowledge, it is earning per share. अब इसको निकालते कैसे? तो फॉर्मूला आपके राइट में दिख रहा है यहाँ पे. EPS कैसे निकालना है? The formula is it is PAT minus preference dividend divided by number of equity shares. तो से आपका पैट अगर 2 करोड़ रुपए है और उसमें से आपने 50 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, तो 2 करोड़ माइनस 50 लाख, और मान लीजिए कि आपके पास शेयर्स है सिर्फ 10 लाख, तो 2 करोड़ माइनस 50 लाख, 1.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 लाख इज गोइंग टू गिव यू ईपीएस. इस तरह से ईपीएस निकाला जाता है, अर्निंग पर शेयर निकाला जाता है. स्टूडेंट्स फॉर्मूला ध्यान में दीजिए, दैट इज अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. So here we are done with all the costs there. तो हमने सबसे शुरुआत पे पहली किसकी कॉस्ट देखी? That is cost of debt. The last one is pending here is cost of retained earnings or reserve and surplus. This should not be pending there. अब आप बोलेंगे कि सर ये होता क्या है? Retained earning is nothing but the profit which is not distributed among equity shareholder. It is rather retained by the business for further expansion and diversification activity and meeting certain emergencies there. So it is cost of retained earnings or reserve and surplus. How to calculate this cost? It is going to be denoted as KR. And do remember everybody, KR is equal to always KE. KR is equal to always KE. What is this? KR is equal to KE का मतलब क्या है? Cost of retained earning मतलब cost of equity capital. Why? Because this retained earning is reinvested in the business for producing returns. This is the amount which is available for equity shareholders, but it hasn't been distributed. ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के लिए अमाउंट हमने रखा था, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया. सो दैट इज KR इज इक्वल टू KE. एंड व्हाई द फॉर्मूला इज दिस वे अराउंड? बिकॉज ये पैसा अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो माइट बी शेयर होल्डर्स हैव स्पेंट इट, बट दिस हैजंट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. दिस इज केप्ट इन द बिजनेस, री-इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, एंड दैट इज हाउ डू रिमेंबर KR इज इक्वल टू ऑलवेज KE इफ इट इज नॉट मेंशन्ड सेपरेटली. तो देखिए, पूरा रिवाइज करता हूं आपके लिए. तो क्या क्या हमने देखा? हमने देखा कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल सबसे पहले. उसमें हमने 2 क्लासिफिकेशन देखे, दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट. उसके बाद हमने देखा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. और डेट में याद रखिए, मेड बी बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, मेड बी पब्लिक डिपॉजिट्स और मेड बी लॉन्ग टर्म लोन. द फॉर्मूला शुड बी वन एंड द सेम, जो मैंने आपको बताया, दैट इज केडी का जो फॉर्मूला बनेगा यही यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा as far as cost of debt is concerned. And next we need to see that the formula in 2 formats, that is redeemable and irredeemable. तो redeemable का फॉर्मूला देख लीजिए, I into bracket P minus NP upon N whole divided by P plus NP upon 2 into bracket 1 minus T. So this is for redeemable debt. उसके बाद irredeemable debt का हमने फॉर्मूला देखा जो बड़ा आसान है, and that is simply KD is equal to I into bracket 1 minus T. आज इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स ये बचाता है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया. लेट मी जस्ट चेक द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, बिकॉज वहां पे कुछ अगर ऐड करने का बाकी है. सो स्टूडेंट, इट इज I plus P plus NP एक्चुअली, एंड P minus NP अपॉन N. तो मुझे यहाँ पे एक चीज बस ऐड करनी पड़ेगी. इट इज I plus P minus NP होल डिवाइडेड बाय N divided by P plus NP upon 2. इसी तरह से मुझे नीचे भी ऐड करना पड़ेगा, that what I should add in cost of preference, DP plus, that is preference dividend plus P minus NP upon N, P plus NP divided by 2. So हमने कौन से फॉर्मूले देखे स्टूडेंट्स और क्या देखा हमने? Just let me summarize it quickly. Cost of capital is nothing but the cut-off rate, minimum rate or hurdle rate which has to be paid by every company to maintain their market price per share, so that shareholders will not leave their company. So that is what cost of capital we have seen. Along with that, we have seen cost of capital is also known as cut-off rate, minimum rate or hurdle rate. Cost of capital has to be either interest or dividend. Interest है मतलब cost of debt capital है, borrowed capital है, loan capital है. और अगर owned capital की बात करते हैं आप, तो उसमें equity share capital है, preference share capital है, या फिर retained earning या reserve and surplus है.
So cost of debt देखिए students, KD we are having for two things. KD is cost of redeemable debt. Redeemable अगर हुआ तो फॉर्मूला हमने लिखा है I plus into bracket P minus NP upon N and whole divided by P plus NP upon 2 and whole multiplied by 1 minus T because interest is going to offer you the tax shield. सबका वेयर मैंने यहाँ पे लिखा है I is equal to coupon rate of interest or fixed rate of interest. P is equal to face value, par value, NP is equal to net proceeds, N is equal to number of years to maturity and T is equal to corporate tax rate. Immediately we have seen the formula for cost of irredeemable debt, my dear, which is very easy. Practically तो ऐसा नहीं होता कि आपने लोन लिया और पे करने से आप पे ही नहीं करेंगे, तो ये impractical है, but yes, so we need to see that KD is equal to I into bracket 1 minus T and formula ये सीधा बताता है कि it is going to offer you a tax shield and save your taxes. Next we have seen cost of owned capital. उसमें सबसे पहले हमने preference share देखा. It is a hybrid mode of raising funds there and having the similar cost of capital. Likewise debt to some part and to equity some part. Debt के लिए इसलिए similar क्योंकि fixed होता है. Dividend fixed यहाँ पे है preference में, तो interest वहाँ पे borrowed में fixed है. उसी तरह से यहाँ पे डिविडेंड हमें प्रेफरेंस पे मिलता है, तो डिविडेंड इक्विटी पे भी मिलता है. तो फिक्स्ड ये डेट का लेते हैं और डिविडेंड ये वर्ड लेते हैं ओन्ड का, इसलिए इसको हाइब्रिड मोड ऑफ फाइनेंसिंग बोला जाता है. और उसका अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होगा जो हम वापस देंगे एज अ कंपनी 5 साल बाद 10 साल बाद प्रेफरेंस शेयर वापस लेंगे, उनको पैसा वापस देंगे, तो फॉर्मूला आता है डीपी प्लस पी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय पी प्लस एनपी अपॉन 2. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ irredeemable preference share capital which is again impractical, that is DP upon NP. and यहाँ पे मैंने आपको बताया तो कि किस तरह से आप इश्यू जब करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स हो, बॉन्ड्स हो या फिर इक्विटी शेयर्स हो, इशूड एट पार, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या है, इशूड एट प्रीमियम इसका मतलब क्या है, इशूड एट डिस्काउंट का मतलब क्या है. फेस की बड़ी कीमत होती है स्टूडेंट्स, फेस वैल्यू इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक देयर, तो जितना वैल्यू प्रिंटेड है उतना तो देना ही पड़ेगा. उससे ज्यादा दिया तो मतलब आपने प्रीमियम कमाया, उससे कम दे रहे तो मतलब आप डिस्काउंट पे दे रहे एंड यू आर इनकरिंग लॉस. अलॉन्ग विद दैट यू कैन सी कॉस्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल देयर. उसमें हमने देखा 3 अप्रोचेस है. दैट इज नंबर 1 इज डिविडेंड प्राइस अप्रोच वेयर इट सेज दैट द कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर. तीनों अप्रोच सिंपली बोलता बता क्या रहे हैं, that market price per equity share is determined by the current dividend paid by the company is KE is D by MP, but it is not true because only dividend cannot decide the market price. Another approach says that the market price per equity share is decided by not only current dividend but growth rate into dividend, so formula is D by MP plus G, but this is also not true. Why? Because equity is not only for dividend, it is for dividend, capital gain and bonus shares. तो ये तीनों का मिलाप यहाँ पे होता है अर्निंग प्राइस अप्रोच में. सो दिस इज द फैंटास्टिक अप्रोच हियर व्हिच सेज दैट K इज इक्वल टू EPS बाय MPS. और यहाँ पे हमने EPS निकालने को कैसे निकालते हैं ये भी देखा है. वी हैव जस्ट सीन दैट हाउ टू कैलकुलेट EPS एंड देन वी हैव सीन वेयर K इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, D इज इक्वल टू इक्विटी डिविडेंड, MP इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर, G is equal to growth rate into dividend and EPS is equal to earning per share. Earning per share का फॉर्मूला मैंने आपको अलग से दिया that it is PAT minus preference dividend divided by number of equity shares. Next is cost of earning, the retained earnings or reserve and surplus. This is the amount which is not paid to the equity shareholders, students, and it is rather kept in the business for further expansion, diversification and emergencies, you can say. That is how it is defined as far as this particular cost is concerned. So students, so all these things are there for cost of equity, cost of preference, cost of retained earning, along with that cost of debt, redeemable and irredeemable, applicable for all three. That is maybe bonds and debenture, maybe it is long-term loan and public deposits. Do remember KR is equal to always KE. Why? Because this is the amount which is not utilized or not paid to the shareholder, rather utilized in the business for further expansion, diversification and meeting emergencies. इसलिए cost of retained earning कभी भी cost of equity ही माना जाता है. I hope student you are going to enjoy this lecture on cost of preference, cost of equity, rather cost of entirely owned capital and then cost of debt capital. So with this we are concluding this lecture. Hope you enjoy this. Thank you. Have a wonderful day ahead and God bless you.